necessare tacitum, which means that, unless it is expressly, there is no specific declaration in respect of cryptocurrency, and government has specifically declared that rupees and other things are legal currency. So which means that this cannot be a legal currency. And then, so question होता है कि अगर currency नहीं है, quite clear. Under Coinage Act, under Reserve Bank of India Act, under any of the Act, Constitution of India, this cannot be a currency. So it's ruled out. आज की तारीख में currency नहीं है. Number one. Number two, can it be goods and commodity? So Bitcoin may perhaps fall under the definition of goods under the Sale of Goods Act. Goods are actionable claims जो define किया गया है, assets, value. अब problem है कि Bitcoin की value है कि नहीं? This is a big question mark. Price तो है, value है कि नहीं? There's a big question mark. So whether it can actually be goods or not is also a big confusion here, because there's no intrinsic value involved. There's no input involved in creating, except perhaps some electricity and some man hours that have been put into creating a computer code, a software. So if you, whether it's good or not is slightly difficult at the moment. हम मान भी लेते हैं कि शायद goods हो सकता है, तो शायद हो सकता है it could be good. Can it be prepaid money? जैसे आप बिटकॉइन के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपको किसी को पैसा देना है, आपने बिटकॉइन यूज कर लिया, तो कैन इट बी अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट? तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो डिफाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Prepaid instrument issued by a non-banking financial company or other institution cannot be of a value of more than 50,000 rupees, and prepaid instruments have to fall under RBI guidelines. So prepaid instrument भी नहीं है वो. Question is whether they are shares or debentures or derivatives. ये भी हो सकता है कि शेयर से सामान ट्रेडिंग हो रही है, रेट बढ़ रहा है, शेयर तो हो ही नहीं सकते, they are not being issued by any company. डिबेंचर भी नहीं हो सकते. डेरिवेटिव्स का बोल सकते हैं कि शायद डेरिवेटिव हो, लेकिन डेरिवेटिव आर डिफाइंड एज समथिंग व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी. देयर इज नो अंडरलाइंग सिक्योरिटी हियर, तो डेरिवेटिव भी नहीं हो सकता है. तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंडर भी नहीं आता, किसी भी डेफिनेशन में नहीं आता. गुड्स के लिए शायद मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है. तो इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ गुड, इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ सॉफ्टवेयर परहैप्स for the purpose of levy of GST and other things. We talk about that in the next slide. अभी इसी स्लाइड में बात कर रहे हैं. तो रेगुलेटरी कंसर्न क्या है? अगर गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करना चाहेगी तो सबसे बड़ा इशू क्या है? नंबर 12 केवाईसी नॉर्म. केवाईसी नॉर्म में बैठाना ही इनको इतना मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल एक्चुअली. अभी जो इनकम टैक्स ने रेड किया था, दे रेडेड द एक्सचेंजेस इन द कंट्री टू गेट द नेम्स ऑफ द पीपल हु वर ट्रेडिंग इन बिटकॉइन. उनके पास जो डेटा मिला होगा उसके बेसिस पर इनकम टैक्स अपना टैक्स लेवी करेगा. उनका डेटा कितना सही होगा उस पर डिपेंड करेगा, और वो उसमें कितनी एनोनिमिटी है और कितना सही नाम लोगों ने बताए हैं. लोग सही नाम क्यों बताएंगे जब आपको आधार देना ही नहीं है, पैन देना ही नहीं, तो आप सही नाम क्यों बताएंगे उसमें अपना? सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो केवाईसी नॉर्म्स में इसको फिट करना भी आसान नहीं होगा. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ बिटकॉइन वुड अट्रैक्ट फेमा. आपको फॉरेन से परचेज या सेल कर रहे हैं आप, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि जिसका फ्लाउटिंग आप कर रहे हैं इजीली. आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. सो इवन दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू बी एड्रेस्ड. फाइनली बात आती है टैक्सेशन की, जिसके बारे में कंफ्यूजन हो रहा है. टैक्सेबिलिटी में वी कैन थिंक ऑफ 3 डिफरेंट सिनेरियोज. नंबर 1, माइनिंग ऑफ बिटकॉइन. इट्स कंसीडर्ड एज अ सेल्फ जनरेटेड asset. So lots of CAs are sitting here. So it would be taxability would be same as capital gains of self generated asset. आपकी वैल्यू 0 है, आपने जितने में बेचा, that would be long term or short term depending upon the period of holding. ट्रांसफर ऑफ बिटकॉइन में कैपिटल गेन्स होगा कि टोकन ट्रेड होगा, ये आपको डिपेंड करेगा whether it's held on capital account or revenue account. Very quickly मैं go to that. And transfer in as consideration, ठीक है. Then the question is, the government has recently said कि हम GST एंगल एग्जामिन कर रहे हैं कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग में GST का क्या होगा. See, if it is currency, there is no question of GST involved here, but it is not currency. So whether it's goods or service, that would be a question. If it is goods, GST experts here can tell you which कहाँ पे बैठेंगे. But if it is not goods, it's perhaps a software. आप 18% उसको सर्विस करके ट्रीट कर सकते हैं, उसको 18% टैक्सेबल होगा आपकी जो वैल्यू एडिशन है उसके उसमें. So this is another thing that which is a dark area for the government at the moment. So government अगर लीगल नहीं है या गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया है, तो भी जो ट्रांजेक्शन हो रही है, when caught, they are liable to all kind of legal action and the penal action that would be attracted because of these provisions.
अगर आप खुद डिक्लेयर करते हैं तो शायद आपका डायरेक्ट रेगुलर डिक्लेरेशन होगा, बट आई डाउट इफ unless you are trading it on on your official, a lot of people are doing it officially also, like lot of institutions have started trading in Bitcoin, so उसमें आपका official होगा नहीं, तो otherwise आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं. Okay, so Reserve Bank of India has been issuing advisory to the citizens from time to time. मैंने कहा ना कि बहुत वेग सी होती है, ये advisory इन्होंने कहा है, Reserve Bank of India advises that it has not given any license authorization to any entity company to operate a scheme or deal with Bitcoin or any virtual currency. As such, any user, holder, investor, trader dealing with virtual currencies will be doing it at his own risk, which also means that they have not banned it, but they have not authorized anybody to issue. But there are dealers operating openly with registration with a website in India, and they have recently formed an association because of this advisory. उन्होंने एक association बना रखी है कि कुछ होता है तो हम लोग मिलके action लेंगे, मिलके government को represent करेंगे. So there are exchanges operating. Reserve Bank says we have not licensed any exchange, but they have not delicensed or deregulated it also. ठीक है. और Reserve Bank ने कहा कि there are 5 major risks involved in virtual currencies. Number 1, digital currency being in electronic format are prone to losses arising out of hacking, loss of password. मैंने कुछ examples आपको बताई दिए इसके. Number 2, the lack of any authorized central agency to regulate the payment, or in case of grievances किसको आप जाएंगे? सतोशी तो भाग गया बेचारा, है ही नहीं. आप किसके पास जाएंगे? कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके सिस्टम में. So there is nobody to, no central authority. There is no underlying of assets for virtual currencies. It's not backed by any asset. इसकी intrinsic value है ही नहीं. तो आप उसको कैसा करेंगे? Number 4, exchanges are located in different parts of the world, so it's very difficult for agencies to monitor the jurisdiction issue. तो इंडिया तो इंटरनेट से बड़ा सबसे इशू हमारे साथ में है ही. And finally, it's prone to create lots of illegal activities, जो इसकी वजह से हो रही है. So you have to, so because of these, RBI has not given a license to any exchange to operate Bitcoins in India, but people are doing it, and they say you are doing it at your own risk. Okay? Quite clear. And government, मैंने जो कहा था वो finance minister का last का, and RBI has been issuing caution to people. Bitcoin में आप trading करेंगे तो बहुत बड़ा risk दिखता है. That's the only thing that we are talking about. Which means you can do it, but आप risk ले रहे हैं अपना, ठीक है? And finance minister ने अभी 30 नवंबर को एक statement दी थी कि government position is quite clear. We don't recognize this as a legal currency as of now. So the hopes could be for the future, but as of now we do not recognize it. So in a way, the government is open-minded about it, but the government, there could be, I see a vested interest in being open-minded here. They are letting the trading, letting people do trading. हम एक तरफ बात करते हैं क्लीन सिस्टम की, मगर हम करने दे रहे हैं लोगों को, कर लीजिए, और हम बोल रहे हैं कि ये लीगल है, ये हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है, आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं. So it's happening. The government is sitting on the fence at the moment. So which I think is not the right policy. Government should have been assertive here in respect of defining whether it's permitted or not permitted. ठीक है. अब मैं आता हूँ असली पार्ट पे, जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, पैसा बनाने के लिए बनाए. There are two things that I will talk about here. In fact, the present, आप इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या होगा, and the future, the future after the future. I'm going to talk about these two different aspects. Well, now I'm changing my tone entirely. मैं अभी तक आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था. I was appreciating the technology. This is one of the best technologies that have come across in recent times. कोई शक ही नहीं इसमें. बहुत अच्छा है, secured है. The problem is, where's the money? आपने जो पैसा बनाया, वो पैसे के पीछे पैसा कहाँ है? आपने जो created money out of thin air, जिसको जीरो से बना के $19,000 तक पहुंचा दिया आपने एक साल के अंदर में. Where's the money? कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है. The total valuation of Bitcoin is more than the GDP of many countries now. इतना ज़्यादा हो गया है वो. So, but where's the money? Actual money कहाँ से? तो गेम ही खेल रहे हैं ना आप एक तरीके से. You are paying a farm bill, जिसको आपने actual monetize कर दिया उठा के. तो tulip mania के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा. 17th century, 18th century, 17th century, 1640s or so in Netherlands. So tulip mania की कहानी का repetition है. In fact, if I was trying to compare it to tulip mania. I found that this is actually a much bigger version of tulip mania. उस समय यूरोप में उस समय जो हुआ था, tulip जो flower होता है छोटा सा, the price of tulip, suddenly tulip became a speculative commodity जिसको लोग trading करने लगे, and the price of one tulip went to a price
which was equal to 2 years average salary of an average European. और एक मकान घर की कीमत के करीब का एक ट्यूलिप की कीमत आ गई थी. People were buying and selling like crazy. जब यूफोरिया बिल्डअप होता है, बबल बनता है, तो दिमाग हमारा किनारे में हम फेंक देते हैं उसको निकाल के पानी के अंदर में. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. आई एम कमिंग टू दैट नाउ. व्हाट इज हैपनिंग, हम दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं. हम वी आर टॉकिंग ऑफ अ करेंसी व्हिच इज रॉबस्ट, सिस्टमैटिक, ट्रांसपेरेंट, जो दुनिया को बदल देगी पूरी. लेकिन पैसा ही कहाँ है उसके अंदर में, इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ है वो. So and we are creating the market in what is called a greater fool theory. आपको मालूम है कि इसमें कुछ नहीं है, आप फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि लोग बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है ना. मैं खरीद के कल बेच दूंगा, पैसा बना लूंगा, फिर दूसरा खरीदेगा, दूसरा. So I am a fool to buy it, but I am no fool because I am selling it to a greater fool. जो bigger than me. मैंने 19,000 में खरीदा, 20 में बेच दिया, आपने खरीद लिया. You are greater fool than me, but you still have a greater fool there. जो 21,000 में खरीद लेगा आपसे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को. अगर मैं गधा हूँ तो क्या वो मेरे से बड़ा गधा बैठा है भाई वहाँ पे तो खरीद रहा है. So this is what is happening. You are creating a market by cross selling among the players. बढ़ते चले जा रहा है. आखिर में क्या होगा, एक दिन सब होने के बाद में आखिर में जो सबसे बड़ा the greatest fool है उसके हाथ में आ जाएगा वो, और उसके बाद में ढूंढेगा कि अब किसको दूँ मैं. There would be nobody left to receive it, you know. So we have, this is what happened in tulip mania. 2 साल की सैलरी के बराबर का एक फूल या एक मकान की कीमत, अभी इसकी एक बिटकॉइन की कीमत $20,000, विच इज कितना हो गया. एक घर मिलता है, एक एवरेज घर मिलता है दुनिया में, किसी आदमी को बन जाता है, मिल सकता है. 10-11 लाख में आदमी घर बना लेता है अपना. तो एक उस लेवल से ज्यादा चले गए हम लोग. वी हैव गॉन टू दैट लेवल नाउ एंड वी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड. मैंने यूट्यूब में आज वीडियो देखे सुबह आने से पहले. आई चेक 50 वीडियोज, 50 में से मुझे 1 या 2 थे जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे. एवरीबडी वाज एप्रिशिएटिंग एंड गिविंग रीजन व्हाई दिस इज गोइंग टू राइज. मानता हूं बढ़ेगा क्योंकि बिकॉज यू आर ट्रेडिंग, यू हैव अ बिलीफ इन ग्रेटर फूल थियरी. बढ़ते ही चले जाएगा भाई, आपसे बड़ा मिलते रहेगा आपको. तो यू आर मेकिंग मनी इन द प्रोसेस. और बड़ा मिलेगा, और बड़ा मिलेगा. लेकिन जब तक हवा है, सिस्टम में गैस है, तब तक मिलेगा. लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगा. और उसके बाद सो इट्स गोइंग टू बी, इफ यू कंपेयर टू द .com मैनिया ऑफ 10 years बैक, क्या हुआ था जब लोगों ने क्वेश्चन करना चालू किया था कि ये बहुत ओवर प्राइस हो चुका है मार्केट. लोगों ने 1000 थियरी बीच में आ गई कि नहीं, वॉरेन बफेट को समझता ही नहीं, कुछ भी बुढ़ा हो गया है वो, तो उसको क्या मालूम है, ये तो नई इकोनॉमी है. दिस इज न्यू इकोनॉमी, दिस इज IT इकोनॉमी. यू नो द फुटफॉल्स काउंट मोर देन एनीथिंग एल्स, द क्लिक्स ऑन द वेबसाइट काउंट मोर देन द फाइनेंशियल. इस तरीके की बड़ी बड़ी नई नई थियरीज निकलने लगी. बिटकॉइन के बारे में भी नई नई थियरीज लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका वैल्यूएशन कैसा किया जाए. पीपल आर ट्राइंग टू, मैंने एक रिसर्च थियरी देखी, उन्होंने अपना नाम भी दे दिया जिन्होंने क्रिएट किया उसको. एंड ही क्लेम्स दैट ही इज लाइक अ मेजर इन्वेंटर ऑफ अ थियरी, जिसका कहना है कि नेटवर्क में जितने नोड्स होंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस एंड इनटू स्क्वायर ऑफ दिस वुड बी द टोटल वैल्यूएशन ऑफ बिटकॉइन. तो जितने नोड्स जुड़ रहे हैं, यानी जितने लोग उसके साथ में जुड़ रहे हैं, उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन हो रहा है. सो यू स्टार्ट क्रिएटिंग थियरीज एंड यू स्टार्ट बिलीविंग थियरी. और ये यूफोरिया जो है स्टुपिडिटी के लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद जाकर क्रैश होता है. सो आई डोंट नो वेदर दिस हैज रीच्ड द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी एज येट. अभी शायद उसमें और दम बाकी है. सो दोज ऑफ यू हु वांट टू इन्वेस्ट, जैसे RBI ने कहा, इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क. हो सकता है बहुत सारा पैसा बना भी लोगे. हो सकता है कि ये बबल बस्ट, जब बबल बस्ट होता है उससे पहले बहुत बढ़ता है वो, तो क्वाइट पॉसिबल 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 10 लाख कहीं भी जा सकता है वो. जब 0 से 20,000 हो सकता है तो 0 से 10 लाख भी हो सकता है. 0 से 10 लाख होने के लिए कोई रीजन ही नहीं. 20,000 जाने के लिए कोई रीजन ही नहीं था, तो 20 लाख के लिए रीजन नहीं, तो 10 लाख के लिए भी कोई रीजन नहीं होगा. तो इट कैन कीप राइजिंग. लेकिन जब गिरेगा तो ये ऐसा बढ़ेगा, जो गिरेगा तो उसके बाद ट्यूलिप मैनिया में आपके हाथ में क्या रह गया था, एक ट्यूलिप रह गया. यहाँ पर ट्यूलिप भी नहीं रहेगा. कुछ भी नहीं है वहाँ. तो ट्यूलिप था कम से कम कि मैंने ये खरीदा था. यहाँ पर वो भी नहीं है. कंप्यूटर कोड था भाई, खत्म हो गया, वो जीरो हो गया. So if you want to take the risk and if you have that risk appetite and you, I just wanted to explain this that this is 101% speculative product. अगर आपको speculation, रतन खत्री का मटका मालूम है ना, बस वही है, nothing more than that. रतन खत्री के मटके में उस आदमी पे ट्रस्ट था, वो पत्ते निकालता था 3 और नंबर देता था, डिक्लेयर करता था, लोग उसको भरोसा करते थे. उस भरोसे को रिप्लेस कर दिया सिस्टम ने. यहाँ पर सिस्टम पे भरोसा है कि सिस्टम में गलत कुछ नहीं हो रहा है. और इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है. ये पैसा है, पैसा ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म क्रिएट किया गया, विच इज द बेस्ट मैकेनिज्म एवर क्रिएटेड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके वैल्यूएशन ले आओगे आप उसमें, पैसा क्रिएट कर लोगे इससे. सो दिस इज व्हाट माय कंटेंशन इज, इन स्पाइट ऑफ व्हाट द वर्ल्ड इज टेलिंग. मैंने कहा मैंने 50 वीडियो देखे, 50 में से 48 वीडियो में लोगों ने अलग अलग रीजन दिए कि बिटकॉइन क्यों बढ़ेगा.
और बिटकॉइन करेंसी क्यों है और बिटकॉइन क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई एम वेरी क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इज जीरो, अ बिग जीरो। आप कमा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद अगर आप कमा चुके हैं, बेचना चाहते हैं तो बेच दीजिए, और रिस्क एपेटाइट है ले लीजिए, लेकिन don't become the last fool. उसके पहले निकल जाइए। This is my advice to you would be. मैंने कुछ लोगों के व्यूज इकोनॉमिक्स के व्यूज ढूंढने की कोशिश की। harshest assessment comes from Nobel laureate Joseph Stiglitz, who says that bitcoins ought to be outlawed. Bitcoin is successful only because of its potential for circumvention. It doesn't serve any socially useful function. Well, I would differ from this in a couple of later slides, but I would agree fully that as a speculative instrument which is allowed to be traded, Bitcoin should have been outlawed, nothing less than that. रॉबर्ट शिलर जेबी इकोनॉमिस्ट है जिनकी बबल्स की थियरी के ऊपर में ही जिन्होंने रिसर्च इनको नोबेल प्राइज मिला है। He said that the currency appeals to some investors because it has an anti-government, anti-regulation feel. You know, people who want no interference of the government, उनको बहुत अच्छा लगता है। न्यू टेक कम्युनिटी को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि न्यू टेक कम्युनिटी जो है, they are very happy with the technology, they are impressed with the technology of the product. They don't understand the market. मार्केट में कितने बूम और बस्ट, जब से बिटकॉइन बनाया उसके बाद में एक भी बस्ट नहीं हुआ। 2008 के बाद का प्रोडक्ट है ये। एक फ्लक्चुएशन देख लीजिए, एक बार नीचे गिरेगा मार्केट तो उसके बाद क्या होगा आप देख लीजिएगा। They don't understand that, but they are convinced of the robustness of the product that they have created. उसमें खुश हो रहे हैं। So it's a wonderful story if it were only true. This is what he has said. And Warren Buffett, the man who I rely on blindly, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं सारी कहानी सुना रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। He said it's a method of transmitting money. It's a method of transmitting money. It's very effective way of transmitting money, and you can do it anonymously and all that. A check, CHEQE check हमारे लिए. A check is a way of transmitting money. Are checks worth a whole lot of money just because they can transmit money? हम चेक को खरीद रहे हैं भाई, चेक का जो पेपर है उसको हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर इस समय। We are actually buying that. उसको $19,000 में खरीद रहे हैं आपको। It's a means of transferring money, nothing else. और हम उसको वैल्यूएशन लेकर आ रहे हैं। Just try to understand what we are buying and what we are selling. People, I'm just surprised when economists come out and give a strong opinion about the intrinsic value of Bitcoin and saying that the Bitcoin will keep rising. They don't understand this basic. इतना बहुत आसान चीजें समझ में तो नहीं आ रही, लोगों को पता नहीं लगता हुआ। Our money orders, you can transmit money by money orders. People do it. I hope Bitcoin becomes a better way of doing it, but you can replicate it in a bunch of different ways, and it will be the idea that it has some huge intrinsic value is just a joke in my view. As simple as that. It's just a joke which people fail to understand when there is a euphoria and there is a bubble in the market. It's a big bubble that is built up in the market at the moment when it comes to Bitcoin. Shane Oliver ने बहुत अच्छी बात की है. He says, we have seen all the previous bubbles. Bitcoin leaves them for dead. पुराने सारे bubbles जो इसके सामने, जब ये crash होगा ना, इतना जबरदस्त crash होगा कि I just can't imagine the disaster that this is going to bring to us. It's going to be disastrous, so to say. So my personal advice for a long-term investor: absolutely no. If you are, if you are a long-term, if you are an investor, don't do it. If you are a speculator, it's your choice. आप करिए आप कैसीनो समझ लीजिए, आप करिए। And somebody has called it Tower of Death. Right now we are looking at a financial bubble that is bigger than the tulip craze, and I believe that we are headed for a Bitcoin crash that will supersede any financial worries of the 21st century. I would be waiting for the day when it crashes. It's going to be disastrous क्योंकि mainstream companies, Amazon भी Bitcoin ले रहा है, eBay भी Bitcoin ले रहा है, सब कुछ ले रहे हैं. Everybody is buying using Bitcoin now. So when it crashes, suddenly, a simple trigger like US government declaring Bitcoin illegal, let's say, खत्म, जीरो हो गया, क्योंकि अभी किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हम illegal declare नहीं कर सकते हैं इसको. So एक simple trigger would be good enough to bring the value not lower but straight to the right value. It has got zero. वहीं तक पहुंचेगा उसको उठा के. So किसी न किसी trigger आना ही है. It's just a matter of time when the trigger. It could be 1 year, 6 months, 2 months, 4 months. I can predict that, but I know that it's going to come to zero, definitely. So when this thing crashes, it will be the pilot jumping the Hindenburg. Hindenburg का plane crash में जो आग लगी हुई थी और pilot had crashed from the plane. We will be crashing. People would be jumping out of the fire
to save themselves, and they won't be able to save themselves. And when it does, it would be a financial nuke going off. It would be like a financial nuclear bomb that is going to trigger when Bitcoin crashes. I'm sorry to use a very harsh language, but this is what happened. But there is a future beyond the future of Bitcoin also. Let me, take time to cover that also. If I got 10 minutes, 10 minutes more? Yeah. Future of Bitcoin beyond Bitcoin. As I told you in the first part of the lecture, this is the most beautiful technology that I have come across. Wonderful. So, Bitcoin ban gaya. Lekin, this I quoted from "The King is dead, long live the king." Charles VI, when he died in France, and Charles VII took over as the king, the official announcement was, "The king is dead, long live the king." Long live the king तो बोलना ही हर चीज के बाद बोलना पड़ता था. एक king मर गया था तो king is dead, long live the king. Bitcoin is dead, long live Bitcoin. This is what is going to happen the day Bitcoin dies. होने वाला है क्योंकि reason is Bitcoin has created such a wonderful technology for us that this technology is going to live with us forever. There are hundreds of different applications which Bitcoin, I would say blockchain. I'll distinguish between blockchain and Bitcoin here. Blockchain technology would hold for people here. There are hundreds of different ways in which blockchain technology can be used. People have started forming venture capital companies, started companies using Bitcoin for lots of other legal purposes. Blockchain for lots of other legal purposes. And they are amazing, just amazing. It's unbelievable. इतना अच्छा यूज हो रहा है. Incidentally, before I get to that, एक चीज मुझे याद आई. जब मैनिया की मैंने बात की थी, जब यूफोरिया सेट होता है तो क्या क्या होता है. So there are Bitcoin trading now. There are Bitcoin future exchanges also now in our country. And as if this is not enough, जब IPOs होते हैं ना जैसे, वैसे people have started floating ICOs, initial coin offering. आप पैसा दे दीजिए, हम आपको initial coin दे देंगे हमारे नया crypto system में से. And later when it grows, आपको जैसे promoters quota होता है, आपको coin promoters quota में से दिए जा रहा है. China has recently banned that. India में अभी ban नहीं हुआ है. Somebody was telling me that somebody in Pune is starting it. So there are so all kind of funny things, funny analogy are going to take place because of the euphoria that is building up. So anyway, so I come to the technology. I just pick up an example. UBS has taken the lead. HSBC and lots of other banks have joined hands in using blockchain for the purpose of their fund transfer validation, which is an excellent technology. So now the government would ultimately do it. Reserve Bank would ultimately do it. They would. Perhaps the central authority will use the same methodology, which is 1,000 times better than the existing technology that they're using. And it does not require a centralized ledger and a centralized verification process. So this technology is going to be used by banks, by institutions, and in fact I created a big graph of different ways and different areas where Bitcoin technology, I call it blockchain technology, is going to be used. And this may not be like gaming and gambling के लिए, energy, e-voting के लिए. Just imagine हमारे EVM के बारे में हम रोज लड़ते रहते हैं कि हमारा EVM hack हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं. छोटा सा simple technology. But when the confirmation is using a blockchain methodology, it's a foolproof, a non-repudiable, transparent confirmation. So हमारी voting process जब blockchain के through हो जाएगी, just imagine कुछ भी नहीं कर सकते फिर कुछ blame भी नहीं कर सकते मोदी जी को कि इन्होंने गलत किया होगा या फिर वो भी नहीं कर सकते एक दूसरे से. So this is what is happening. So there are lots of and company, ये जो मैंने example लिखे हैं ना, I've given list of इतना बारीक है यहाँ पे, but you can see the list of the companies who are already doing birth and death certificates, blockchain verification, आपके relatives का witness उसमें online हो रहा है, जिन्होंने funeral attend किया उन लोग अपनी witnessing कर रहे हैं. It's all the blockchain process. जितना ज़्यादा लोगों का हो रहा है उतना confirmation हो रहा है. So just imagine the future of this technology. कहाँ होगा? तो जिस दिन Bitcoin मर जाएगा, and I know Bitcoin is going to die one day or the other. I know about that, and I'm confident about that. But something good is going to emerge already. It's already emerged out of this technology, which is going to be wonderful. Land registry, hundreds of potential. And I would mining. There are 100 network instructions, esports, ride share. Even Uber has started working on Bitcoin technology, blockchain technology for creating the ride mechanism now. So they are already investing a lot of money into that. So hundreds and thousands of good potential that would emerge are already emerging out of this technology. I would just conclude by giving one interesting example. The world's first Bitcoin wedding. For better or worse,
till death do us part because the blockchain is forever. This is what they said when they married. So the first couple to get married on Bitcoin use on blockchain, use the whole technology. Just imagine, government के registration की जरूरत ही नहीं होगा आपको. It would be all through the mechanism of blockchain that you would people have started doing it, experimenting with it, and statutory requirements would be made by the person running the blockchain. So it's easy now, easy to operate. This has happened already on October 7, 2014, and there are lots of marriages have taken place using blockchain after that. So these are the potential that this technology holds after Bitcoin would be dead. And Bitcoin ultimately is going to be either dead or it becomes centrally controlled. It becomes a fiat currency perhaps. The government takes it over, or it becomes maybe the government starts its own blockchain currency. This is what is the future of Bitcoin for me. So I think from zero to everything I've been able to explain in the shortest possible time here, and I'm sure of the queries that are going to come, and I'm going to answer them. Thank you very much. Thanks once again, Thank you, sir. I'm sure that not many questions are going to be here. Actually, we are there has been sufficient for the question and answer. It's an open session now. कुछ लोग आगे आ सकते हैं. Sir, can I ask? Yeah, let's go ahead. Mic ले लेना है. Sir, why are you so sure that it's going to crash? Because it has, something its intrinsic value is zero, has to come down to its intrinsic value someday or the other. Sir, एक question चलेंगे जैसे. I think he has answered that. You answered it. Yeah. So that's why I'm asking. Yeah. So you moderate. Yeah, sure. The question is, in America, now the trading has started and it is the blessings of the government. Correct, sir? Right. So, See, a lot of people commit suicide because they lose money in speculation, in a legal exchange also. अब forward trading में भी होता है, futures में भी होता है. So it's for you to decide. Trading हो रहा है, government has enabled trading mechanism with all the risk. वो आपको बताएंगे कि वो छोटे print में क्या लिखा रहता है, all market risk subject to market risk. इससे बोल दिया जाता है कि समझ में नहीं आता क्या बोल दिया. So that is there. So government has enabled the mechanism. Government ने license नहीं दिया है, government ने इसको बंद नहीं किया है. America is quite an open economy from that point of view. They encourage technology. Always they do that. But इसमें it always comes with a risk कि आप इसमें पैसा अपने युग में burn your fingers in that. It comes with that risk. no, but see, America has opened up only on the 8th of December. And you see the graph of Bitcoin after 8th of December. It has shot up like not required. Right. So one Bitcoin community, the speculator and the investors are waiting for triggers now. एक अच्छा ट्रिगर मिलेगा बढ़ेगा, एक खराब ट्रिगर मिलेगा गिरेगा. चाइना ने जब ICOs को बैन कर दिया तो एकदम से नीचे गिर गया. So it's speculative product, और speculative product का की लाइफ ही ऐसी होती है, न्यूज बेस्ड ऑलवेज, न्यूज एंड रूमर बेस्ड ही रहेगा वो. Because But in that way, share market is also like that. Quite possible, But the but share government market supports that. Share market has The economic performance of the governments are also judged by how the share market is Absolutely. doing. That's why share market So की भी why invest there है. is an allergy for this There is Bitcoin? no allergy. आप करिए ना इन्वेस्ट, हम यही कहते हैं. बट आपकी वैल्यू जीरो है, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं. No allergy. If you want to get into a product which is extremely risky, आप कर सकते हैं. There is no allergy. No, risky because probably we do not know most of the things about that. So that's why. we know, there's nothing beyond this. In short, I have told you. यही है सब. इसके beyond कुछ नहीं है. So next question. Pankaj, mic. No problem. Can I ask the question? Yeah, please go ahead. Okay, thanks to Wipro Industries Association first for organizing such a wonderful lecture, and thanks to you, sir. My question is, okay, my question is very simple, sir. We've been hearing that Bitcoin में कोई intrinsic value नहीं है. Sir, एक fiat currency में मुझे बता दीजिए इसमें value है intrinsic. Fiat currency में intrinsic value नहीं होती. Fiat currency में government की backing होती है. Exactly. The central government, the government of the country promises you a value equal to the amount of money into it. इसमें किसी की गारंटी भी नहीं है, बैकिंग भी नहीं है. So this is neither
a storage currency nor a fiat currency. This is what I was saying. Exactly, sir. That is what I am trying to say. एक सिंपल चीज है कि मेरा एक पर्सनल हाइपोथेसिस है, 3 चीजें हैं जो कि आज वैल्यूएशंस को ड्राइव अप कर रही है। एक रेगुलेटरी गैप है, दूसरा अब ब्लड और ब्लैक मनी इसके थ्रू लॉन्डर कर सकते हैं, और थर्ड इज जो मोस्ट क्रूशियल थिंग है, एक्चुअली बिटकॉइन का वैल्यूएशन सर आज के दिन में अगर आप देखेंगे यील्ड स्कैर्सिटी की वजह से है, और एक एक्सेसिव लिक्विडिटी जो है मार्केट्स में, दैट इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड इन बिटकॉइन. Right. So actually the problem is not Bitcoin, but the problem is that the central banks in the Western European countries and in US, they are flushing money like hell. So that is actually getting absorbed. The problem is not Bitcoin, but the central banks, that's what they are doing over there. Right, fully agree with you. This is what speculation is. Demand supply का जो gap होगा, that would determine the price. So speculation यही होता है. What I am trying to bring home the point is that there is absolutely no intrinsic value. Speculation is creating a price. So, and since it is based on speculation, unlike stock market where there is some intrinsic value to fall back upon, जिसको हम efficient market hypothesis कहते हैं, जिसके हिसाब से market sooner or later comes to the realistic price of the share that you are buying or selling. इसमें realistic price है ही नहीं. So realistic price नहीं है तो it could be anything, it could keep rising. मैंने कहा ना 1 लाख भी बढ़ सकता है, 10 लाख भी हो सकता है. Quite possible as long as money is being pumped into the system, it will keep rising. और इसको शॉर्टिंग का मैकेनिज्म उतना इवॉल्व नहीं हुआ है अभी. रिसेंटली देयर हैव बीन फ्यूचर एक्सचेंजेस व्हिच हैव कम आउट. शॉर्टिंग का मैकेनिज्म नहीं है और जितना पैसा आएगा उतना बढ़ेगा. लिक्विडिटी बहुत कम है, सिर्फ 10% पॉइंट्स मार्केट में है. मोस्ट ऑफ देम आर ऑन बाय और होल्ड बेसिस. दिस इज एन आइडियल ग्राउंड फॉर स्पेकुलेशन. वो आज बोल रहे वही बोल रहा हूँ मैं, स्पेकुलेशन है. Sir, are we not actually comparing apples with oranges? ये payment of settlement मैं यही part है. एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ. Saying that this is an asset class. एग्जैक्टली मैं पूरा लेक्चर यही है मेरा कि एसेट क्लास को कंफ्यूज कर रहे हैं. इट्स नॉट एन एसेट क्लास, इट्स जस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट. वही तो मैं कह रहा हूँ शुरू से आखिर तक. तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद एन इंट्रिंसिक वैल्यू सर. वही मैं कह रहा हूँ. दिस इज व्हाट माय लेक्चर इज ऑल अबाउट. दैट डज नॉट हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू. इट्स अ पेमेंट मैकेनिज्म. आप जो बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ. एग्जैक्टली. Sorry, but my question is not answered, sir. I won't take much time, but go ahead. I need to have a word with you. Sure, later. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे तो मुझे जहाँ लगता है कि we need a discussion on that. अभी ये weekend आ पाए ना, मैक्सिमम लोगों की queries अपन cover कर पाए, and at the end of this session we can further take up the things. सर एक बाजू के भी रूम है, पंकज सर बाजू का भी रूम पूरा occupied है, कुछ queries वहाँ से भी होंगे तो mic here and there चलने देते हैं वो queries. पंकज सर queries और एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी क्वेरी हमेशा मुझे मालूम है. मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि इसकी क्रैश होने की पूरी संभावना है. मेरे हिसाब से तो 100%. हाँ, मगर मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट में ट्रिगर दैट. Since it is, yeah, मैं speculate, it is very speculative actually. बहुत सारी चीजें हो सकती है. नंबर 1 हो सकता है when it runs out of steam, यानी कि और ग्रेटर फुल बचा ही नहीं. You know, एक दूसरे पे ट्रेडिंग कर ली हमने उठा के पूरी. ऐसी संभावना तो है नहीं कि बहुत मिलते हैं, 1-2 मिलते हैं. दूसरा रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क होगा, जैसे यूएस का कहा कि यूएस ने वैलिडेट किया, इमीडिएटली बढ़ गया. किसी ने इसको रेगुलेट करने की कोशिश की, क्रैश हो जाएगा. होना ही है. जब टेररिस्ट मनी इसमें इन्वॉल्व है, स्मगलिंग का पैसा इन्वॉल्व है, ड्रग्स इन्वॉल्व है, तो रेगुलेट करने की कोशिश तो कहीं ना कहीं होगी ही. और रेगुलेटरी मैकेनिज्म से ही क्रैश होगा मुझे लगता है जब भी होगा. But countries like Venezuela, which is the 5th largest producer of oil in the world, they are also going for the justice. You can listen. नहीं यहाँ बाकी लोग भी ऐसे So they are going for cryptocurrency. They say that we are declaring this as our national currency. उनकी नेशनल करेंसी इतनी खराब है. हाँ. इसका एप्रिसिएशन तो हो जाएगा कम से कम. So they are finding it a better solution. But I tell you, in the long run, I see all currencies becoming cryptocurrency. आज से 20 साल के बाद शायद हमारा रुपी इस फॉर्म में होगा ही नहीं. मोदी जी को डिमोनेटाइज करना ही नहीं पड़ेगा. No, because Mamata Banerjee. Yeah, everything would be Bitcoin. Bitcoin, official Bitcoin. Sir, Mamata Banerjee has made a statement that she would develop all this accounts and everything on the blockchain basis. So she is the first lady from India. I'll be happy if she does it. I'm very happy if she does it. But Bitcoin has that. Blockchain has got that potential. No doubt about that. जो अमिताभ बच्चन ने इस कंपनी में पैसा कमाया ना, अभी इस समय पोजीशन ये है कि ब्लॉकचेन का नाम में ही इतना बड़ा यूफोरिया है
कि आपने किसी कंपनी के नाम में ब्लॉकचेन लगा दिया ना तो वो 100 गुना बढ़ जाती है। दिस इज द सिचुएशन। अमिताभ बच्चन का जिस कंपनी का उसने बेचा नहीं है शेयर, जिस कंपनी में पैसे लगाए थे उस कंपनी इज इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसने नाम में ब्लॉकचेन लगा दिया है और वो 100 गुना बढ़ गया उसकी। सो दिस इज जैसे .com में होता था, .com कर दीजिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप गधे चलाते हो तो भी कंपनी का नाम .com डाल दीजिए, आपकी बढ़ जाती है। इस समय वही हालत है .com में। .com ब्लॉकचेन, लेकिन ब्लॉकचेन में पोटेंशियल डेफिनेटली है, ये मैं कहूँगा। How to adjust the Bitcoin currency in normal currency? करेक्ट, जैसा आपने खरीदा था वैसे जिससे खरीदा था उसको बेचना नहीं। See, there are exchanges in the country. हमारे देश में